या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। स्टार्ट ऑफ ए न्यू वीक है। आज सोमवार का दिन है। देखते बाजार क्या लग रहा है। अगले हफ्ते तो बाजार ने एज अ ट्रेडर परेशान किया आपको, एक ही रेंज में रहा है। क्या ये वीक रेंज टूटेगा कि और एक हफ्ता जो है हमारा कंसोलिडेशन में निकलेगा। वो सब आज हम एक्सप्लोर करते हैं चार्ट्स पे। और लग तो रहा है कि एक आध और थोड़े दिन मार्केट एक जोन में निकालेगा। इंट्राडे वॉलेटिलिटी इट विल गिव, बट नेट नेट ऐसा कुछ ट्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आई विल रीड आउट द डिस्क्लेमर and then we are going to start. Yeah, good morning all the trading titans out there. So let me read out the disclaimer first. Yes, good morning Shabaki, Yazur, Inzamam, Vasu, Madhur, Kaustam. Yeah, सोमवार का दिन है। I guess traders are joining. So this is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. So let's see how the plan looks like 17 अगस्त के दिन. We'll explore all the charts. Plus make sure you go through the Substack note also weekly. So I'll introduce you to the Substack weekly note also. How many of you have gone through it? Let me see कितने जन ने देखा है वीकेंड को. See, Substack, the weekly note becomes our foundation for the full week. Yeah, Custom, I saw you read. I don't know, somehow किधर चला गया. Yeah, there it is. So we take lots of effort in writing this note, which becomes your all the charts are your foundation for the week. We don't cover anything here for a day, but from the trend perspective, which is valid for a week. Go through it. So let's start. ग्लोबल मार्केट्स देखते क्या बोल रहा है सोमवार के दिन, स्टार्ट ऑफ अ फ्रेश वीक. वॉल स्ट्रीट फ्यूचर स्टेडी एज रेट हाइक फियर इजेस. चलो, उधर रेट हाइक आने वाला नहीं है, एटलीस्ट अभी तक का वो सेंटिमेंट है. अर्निंग अच्छे आ रहे. सो दोज आर द टू पॉजिटिव फ्रॉम द यूएस मार्केट्स. फ्यूचर अभी फ्राइडे भूल जाते हैं, फ्यूचर्स देखते हैं. 74 पॉइंट्स अप है, विच इज मोर और लेस फ्लैट. एक बार सारे ग्लोबल इंडाइसेस देख लेते हैं कि कुछ अफरा तफरी है, सम बिग मूव, सम बिग अपसाइड्स. और अगर नहीं रहती तो हम क्या अपने मार्केट के हिसाब से सॉफ्ट ओपनिंग का मार्केट रहेगा. एंड देन वी हैव टू फॉलो इट विद आवर टेक्निकल्स थ्रू आउट द डे. सो यस, यूएस फ्यूचर्स फ्लैट है, 74 पॉइंट्स डाउन. टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ऊपर है, 91 पॉइंट्स. पूरा यूरोप मोर और लेस मिक्स्ड है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है. बवस्पा ब्राज़ील भी 0.20 है. निकाय फ्लैट है, हैंगसेंग भी 1% ऊपर है. So what the global markets are showing before we are starting is that markets globally are in a quiet mode. इतना देखने के बाद the next step what we do is we go and see what the gift nifty is. अभी तक जो देखा नेगेटिव न्यूज फ्रॉम ईरान यजूर, बट आई एम नॉट सीइंग इट इन द हेडलाइंस, कहीं छुपे रहेंगे. सो अगर गिफ्ट निफ्टी देखे तो आई थिंक एक स्ट्राइक माइनस ही होगा. इट्स बिकॉज इनसाइड डे था और सारे ग्लोबल मार्केट्स फ्लैटिश टू माइल्डली नेगेटिव है. नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे, माइनर कट बोलेंगे उसको. सो गिफ्ट निफ्टी शुड बी माइनस एनीवेयर बिटवीन 30 to 50 पॉइंट्स. एक बार देख लेते. I don't watch Gift Nifty before. I try to see with thoughts and perceptions what it could be right now. So yeah, it's down 36 points. No big cut out there. तो एक soft opening रहेगा हमारे market का. Yajur, if you saw that Iran negative news, you can send the link, Yajur. Yajur 26. Okay. After that एक बार crude देख लेते हैं. सो क्रूड मोर और लेस इज साइडवेज. ईरान का कुछ न्यूज है, अदरवाइज नीचे रहता. सो
बहुत ज्यादा क्रूड ने उछल पतल किया तो ये $86 तक की है, इसके ऊपर अभी तो नहीं लग रहा बिकॉज ऑल टाइम फ्रेम पे ट्रेंड्स डाउन हो गई है क्रूड की। यजुर मुझे दिख नहीं रहा न्यूज, इफ यू हैव यू कैन पोस्ट द लिंक इन द चैट। सो क्रूड इज जस्ट गाइरेटिंग बिटवीन दिस और यही रहने वाला, क्रूड डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा। अल्टीमेटली देखिए आपको क्रूड यहां तक दिखेगा विच इज क्लोज टू $68। क्रूड का जो डायरेक्शन है मीडियम टर्म, वो मीडियम टर्म लोअर हाइज लोअर लोज है। So crude not showing any untoward, but yes, जैसे यजुर has said some negative news of Iran and crude अभी hold कर रहा है। So GIFT Nifty minus, crude flat, global markets flat। इसके बाद let's go to India VIX। If I go to India VIX, then VIX अभी भी एक रेंज में ही है। We are waiting for any break up or down, if you remember। तो ये दिखा रही है एक रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी। सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, जो इसका बेस है, इट्स विक्स इज बेसिंग, इसको भी हम फ्लैग ही बोल सकते हैं, फ्लैट। निफ्टी इज बेसिंग इन दिस फ्लैग, गेटिंग माय पॉइंट। So here you have a volatility within a flat range, Nifty you have volatility within a slanting range, जिसको हम flag बोलते हैं। So more or less VIX, this is VIX, let me write it down because VIX को देखना जरूरी है, short term traders you can't ignore volatility, and this is your Nifty। So one is volatile in a sideways range, other is volatile in a downward drifting range, that's the only difference। देखिए जब तक VIX ये रेंज तोड़ नहीं रहा है, द डायरेक्शन मूव जो आप ट्रेडर्स खोज रहे हैं निफ्टी में वो आएगा नहीं, वो आ नहीं रहा है। Why? Because at some point of time, extreme short-term price movements are inversely related to what's happening in the VIX. So VIX का रोज आप ध्यान रखो, कौन से साइड VIX टूट रहा, we have to be aware of it। After this only we go to a Nifty। Never make the mistake। बहुत ट्रेडर्स क्या करते, स्ट्रेट निफ्टी में चले जाते, सर मत करो ऐसा। Don't straight away go to Nifty। I think my face is appearing very hazy, I don't know today, YouTube is not liking my face। It's okay, the charts are clear। देखिए निफ्टी जो है अभी भी 200 डे में विपसॉ कर रही है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सब ट्रेडर्स को एक काम करना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खोलना अपने प्लेटफॉर्म पे, इनक्रेड मनी पे 200 डे डालना है, एंड लेट दैट लाइन गेट रनिंग अक्रॉस योर प्राइस चार्ट। इसको इग्नोर मत करो, ये एज अ रूल यहाँ पे रहने दो। सो आई जस्ट ड्रॉप अ लाइन ओवर हियर। So the red line which is running is a volatility line for intraday in which prices can spikes up। वहां पे गया तो it will affect the resistance। So that's your 200 दिन का एवरेज का भाव है। अभी हम 60 मिनट्स पे चले जाते हैं। देखिए 60 मिनट्स पे गए ना, मार्केट एक बहुत ही डिफाइंड रेंज में, जब मैं डिफाइंड रेंज बोलता हूं तो यहां से एक स्ट्रॉन्ग क्रैक आया था। ये जो क्रैक है इट बिलोंग्स टू सेलर्स और सप्लाई। So ये सप्लाई क्रॉस करना लग रहा, मार्केट माइट फाइंड इट टफ, विच इज 24,480। कितना भी मार्केट ऊपर नीचे करे इट विल फाइंड रेजिस्टेंस हियर बेस्ड ऑन 60 मिनट्स, एंड देयर वाज अ बिग मूव हियर। यहाँ पे हमने देखा दो बार इंट्राडे हमें 50 से 70 पॉइंट की स्पाइक्स मिली है, ट्वाइस फ्रॉम हियर। सो हम इसको सपोर्ट लेके चल रहे, अभी लोअर सपोर्ट यहाँ पे नहीं मार्क कर रहे, जो कि 24,900 है, जो कि 70 पॉइंट नीचे। तो मार्केट ने ये एक दायरा अपना बना के रखा है, कुछ अनटूवर्ड होता है तो फिर आप लोअर सपोर्ट 22,200 के आसपास चले जाओ, बट आई विल स्टिक टू दिस। आफ्टर दैट आई गो टू माय दिस टाइम फ्रेम चार्ट्स। देखिए फ्राइडे का सारा दिन और थर्सडे का सारा दिन यहाँ पे, अभी आप इस पे ध्यान रखो। सी दिस इज दैट कैक प्राइस, आई डोंट बिलीव इन दिस। देखिए 200 डे पे जाके इंट्राडे में मार्केट रुक रहा है, फ्राइडे को भी जब पुल बैक आया तो 200 डे पे रुक गया, फाइन। So this is the 200 day exponential moving average which I want every trader to plot on the price chart। See क्या होता है ना, जब इंट्राडे में important average is specifically 200 DMA, ये exponential है, जब रन करती है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। जब तक उसके ऊपर नहीं जा रहा, एक तरह का साइडवेज या तो निफ्टी फॉर्म ट्रायंगल आप
देखिए ब्रॉडर फ्लैग में चलिए आरिफ, ये सब छोटे छोटे ट्राइंगल्स इज गुड इनफ टू ट्रेड विद इन द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस। और ट्राइंगल नहीं बोल सकेंगे आरिफ बिकॉज ये लो टूट गया, ट्राइंगल में लोज नहीं टूटने चाहिए। So it's not a triangle, Arif. It's just a sideways range. Is it okay, Arif? So I repeat, it's not a triangle. It's just a sideways trading range. So that's Nifty on a 15 minutes. Morning, I think we are going to trade in this range only, जिसको मैं 1 बोलूंगा। नो आरिफ देखिए ये लो इसके नीचे चला गया तो ट्राइंगल नहीं बोल सकते आरिफ। ट्राइंगल के लिए हायर लोज होने चाहिए और लोअर हाइस। ऊपर वाला ठीक है बट नीचे वाला ये लो तोड़ के इट्स नॉट अ ट्राइंगल, इट्स अ साइडवेज कंसोलिडेशन। सो द प्रोबेबल टुडे इज दिस फॉर निफ्टी 1. Fine. As the day progresses, you as a trader have to work a bit hard and mark a support. See, ये सब बैकअप सपोर्ट में बना रहा हूँ, रेजिस्टेंस मोर और लेस आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू क्रॉस दिस। अगर बैकअप सपोर्ट बनाना है तो फिर मार्केट यहाँ से घूमा था, so this is the small little, but I doubt market से कुछ भी हो सकता है, but as of now this is what we are going to trade today, where I have marked 1 and the dashed line what we call mapping the markets. Everybody clear about this? Give me a yes so we can go to Bank Nifty. Yeah, I want yes from all. Only 5 likes, sir. Hope you're not liking the session today. I'm putting in a decent effort together along with you. So the likes are still 5, only 1 increase, 6. Guess other 33 participants are not liking the session. Okay. So after this, if you want, take a screenshot, do whatever you want, make sure follow a plan. Be aware of this. This is the big daddy right now for day traders. Yeah, good morning, Om Prakash ji. So now let's go to Bank Nifty. सी जैसे निफ्टी में 200 डे एक्सपोनेंशियल वॉलिटिलिटी क्रिएट कर रहा या तो एक तरह का विपसॉइंग दे रहा, उसी तरह बैंक निफ्टी जो है ना वहां पे 200 डे सिंपल का काम हो रहा है, विच मींस दैट्स रनिंग अक्रॉस द प्राइस चार्ट्स एंड गिविंग दो स्पाइक्स। सो मैं बैंक निफ्टी में आपको 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है, देखना एवरेज कौन सा है एंड देन जस्ट ड्रॉप अ लाइन ओवर हियर। ओके, रेड लाइन कर दो तो डिस्टिंक्ट रहेगा, कलर इज ऑल योर्स, इट्स फाइन। सो दिस इज द 200 DMA फॉर बैंक निफ्टी, समवेयर अराउंड हियर, थोड़ा मिस हो, इट्स फाइन। सो बैंक निफ्टी देखिए रिपीटेडली ये जो है यहाँ से पुल बैक आया, इट हैज कम फ्रॉम दिस सपोर्ट, ये जो गैप वाला सपोर्ट है, तो ये मैं पूरा ही ले रहा हूँ। लेट्स सी, ओके वॉयलेट हो गया तो नाउ विल कम क्लोज टू दिस प्राइस ओनली। तो ये जो है ये मेरा बैंक निफ्टी का 57,280, तो करीब करीब ये 300 और 500 200 पॉइंट का डाउन साइड दिखा रहा है, विच मीन्स द सपोर्ट लेवल इज देयर। देखिए बैंक निफ्टी का ये जो कंजेशन है इसको मैं पिवट बोलूंगा। पिवट का मतलब अच्छे दिन में निकाल देगा और साइडवेज रेंज में होल्ड करेगा। सो जस्ट ड्रॉप अ लाइन एंड कंसीडर दिस एज अ पिवट, विच मीन्स इट मे ट्राई टू गो ऑल द वे टिल देयर। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं सप्लाई की, सो दिस इज द कैंडल। सो मोर और लेस बैंक निफ्टी का एक भी रेंज डिफाइंड हो गया, 200 डे है, वहां पे आपका विप्सो आएगा। देखिए पिवट इसलिए बोल रहा हूँ ना, रिपीटेडली एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, निकाला नहीं। ऐसे लेवल जब निकाल देते तो आपको 50-100 पॉइंट का स्पाइक्स आ जाता है। और ये एक बेस है बैंक निफ्टी का 15 मिनट पे। अभी सेकेंडरी सपोर्ट अगर हम ले ले, विच राइट नाउ वी आर नॉट कंसिडरिंग, बट अगर मार्केट में थोड़ा प्रेशर आ गया और डिप आ जाता तो यहाँ तक जा सकता है। सो दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी इज। सो मोर और लेस आई थिंक बैंक निफ्टी इधर ही रहेगा। लेट्स सी एज डे प्रोग्रेसेस। देखिए ये जो रहता है 11, 12, 1 बजे तक, उसके बाद हमें देखना मार्केट डायरेक्शन कौन के साइड ले रहा है। और बैंक निफ्टी में भी देखो तो लास्ट 2 दिन का जो वो फॉल है, फॉल तो नहीं बोलूंगा, ड्रिफ्ट है, दैट हैज टेकन द शेप ऑफ अ चैनल। मार्क अ चैनल ओवर हियर, कनेक्ट द लोस। सो दिस इज हाउ योर बैंक निफ्टी इज लुकिंग लाइक।
Everybody clear about this Nifty and Bank Nifty? अभी फिर कैमरा ठीक हो गया. I can see my face very clear. I don't know what's happening. And I have given the link of the Substack note. It takes me close to 5 to 6 hours to write this note, in which I cover all the indices: Nifty, Bank Nifty, mid cap, auto, IT, pharma, US market में S&P, then commodities में gold, then crude, and then two stocks which should be in the spotlight. So make sure you read this note, and if anybody wants, you can subscribe to Substack. You can see there is a subscribe tab out there. You will receive the note Sunday maximum by 6 in the evening. And this is honestly my base for the next full week. हम जो भी सेशंस करते ये नोट का बेस रख के करते. So don't miss out on this. Anybody who has yet not subscribed, so make sure you subscribe and receive it in your inbox or by Sunday of every week. So that's all from my side. एक बार open interest देख लेते. Let's come and see the open interest. From the option data, मुझे cumulative देखना है कि overall क्या position है market में. As far as Nifty is concerned. Why? Because कल expiry है. देखिए कॉल पुट दोनों बराबर है. कॉल में करीब करीब 1 करोड़ का ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है. अभी हमें देखना ये टावर कॉल की तरफ ऊपर जा रहा है कि पुट की तरफ. राइट नाउ वी आर इनटू अ स्टेज ऑफ व्हाट वी कैन से इक्विलिब्रियम. अगर पीसीआर भी आप देख लो तो करीब करीब 1 के आसपास ही होगा. या इट्स 0.88. सो मार्केट इज इवनली पॉइस्ड अभी हम बोल सकते हैं. और अगर हम हाईएस्ट ओआई में देख लेते हैं, which we should daily watch it, is on the open interest side on the Nifty. So if I see the highest open interest on the Nifty based on the current price, तो वो है 24,500 पे. उसके बाद सीधा है 24,25,000. वो तो आज आने वाला नहीं है. So let's work with 24,500 as a resistance और last low में 24,300. उसके बाद सीधा 24,000 है. So these two are aligning with what we say, this price, call and put, aligning with the price action, which is 24,300 and 500. So it's showing that at least market will gyrate in a 200 points range before it decides whether it still want to trade in this range with intraday volatility, or market says I want to break free. Right now it's saying market is not singing I want to break free. So this is how both price action and the options data are showing a 200 points range. So have you all subscribed to the Substack note, everybody? And make sure, again I said it takes me 6 hours to write this note. I read each and every chart. I start with the monthly time frame, come to the weekly, and then conclude on the daily. So, and do post your comment also on the Substack note. Plus, once I end the session, you can send your comments about the sessions also. So that's all from my side, friends. You have enough to read or analyze before market opens. So keep your Substack weekly trading titan technical note as a base, and then you can create chart your own plan. So that's all from my side. Thanks. Have a nice day, everybody. We'll again meet at 3:45 in the evening.